afternoon, guys. Today we'll start with our last chapter of your syllabus, that is chapter number 8, Common Business Terminologies. ये चैप्टर में आप लोग अब तक का जितना चैप्टर्स पढ़ कर आए हो ना, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स टिल नाउ. इसमें हम लोग एक कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वेरियस पर्टिकुलर नए टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग को पहले से पता है. क्लास 11 या 12 में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, या रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में आपने CSEET में पढ़ा होगा. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज टर्म्स. जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे ना, मेजॉरिटी आपको पता होगी. ठीक है. we'll study about business terminologies, that is the common terms which are used in business. Okay. सबसे पहले हम लोग समझते हैं what do we understand by the term business terminology. ठीक है. देखो, ये डेफिनेशन पहले आपको याद करनी है. The topic of business terminology is the main vehicle by which facts, opinions, and other higher units of knowledge are represented and conveyed. Sound terminology's work is meant for reducing ambiguity and increase clarity. क्या बोला है यहाँ पर? बोला है कि बिजनेस टर्मिनोलॉजी वो व्हीकल है जहाँ पे अलग अलग फैक्ट्स, ओपिनियंस, यूनिट्स, नॉलेज का शेयर किया जाता है विच आर यूज्ड इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, राइट? सो सच terminologies or such terms which are used in business, that particular entire system is called business terminology. This is important for MCQ. So what is business terminology? आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है 10 basic terms which are connected with business. 10 most important basic terms which are used in day to day business. सबसे पहला है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या बोला है? दोज इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस. दोज इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस. हमारे स्कूल में अगर आपको पता हो, याद होगा, तो मॉनिटर्स हुआ करते थे हु टुक द चार्ज ऑफ द एंटायर क्लास, राइट, इन एब्सेंस ऑफ द टीचर. सिमिलरली सपोज करो आपकी टीचर का क्लास है और वो सब्जेक्ट वाली टीचर मैम आती नहीं है और वो मॉनिटर को इंचार्ज देके जाती है कि आई विल बी नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, सो प्लीज यू टेक इन चार्ज ऑफ द क्लास इन माय एब्सेंस. सो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज. व्हेन यू आर गिविंग इन चार्ज समथिंग टू समवन. यहाँ पर बिजनेस का इंचार्ज की बात हो रही है बिकॉज वी आर स्टडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. तो अगर हम बिजनेस का इंचार्ज किसी को दे के जाते हैं अपने बिहाफ में, अपने एब्सेंस में, दैट इज मैनेजमेंट. सेकेंड इज बिजनेस. हम बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है, बिजनेस तो हम सबको पता है, लेन देन को बिजनेस बोलते हैं. यस, करेक्ट. In layman's language, it is len-den. But what is actually business? The activity of providing goods and services for earning profit, which involves financial and commercial aspects, right? Why do we do business? To earn profit. Third point is marketing. The commercial process involved in promoting and selling and distributing a product or service. कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी में वी आर एंगेजिंग, जिससे हम लोग अपने सेल्स को और बढ़ाने के लिए प्रमोशन करते हैं, कोई भी तरह का खर्चा करते हैं जिससे हमारी सेल्स में इम्पैक्ट पड़े, प्रमोशन हो हमारे बिजनेस का. इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैम्पल्स, इट मे बी गिविंग प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज. ऑल सच थिंग्स आर व्हाट? प्रमोशन. एंड प्रमोशन इज व्हाट? इट्स अ process of marketing. Next is profit. The amount of money left over expenses are taken out. हम सबको पॉकेट मनी मिलता था जब हम लोग छोटे थे, आज भी मिलता होगा, राइट? आई एम श्योर. तो मुझे याद है, मुझे 500 रुपये पॉकेट मनी में मिलते थे. अब उस 500 रुपये में मान लो मेरे 400 रुपया खर्चे हो जाते हैं, तो कितना बचा मेरे पास? 100 रुपया. अब ये जो रुपया बच गया ना, आफ्टर कटिंग आउट माई एक्सपेंस, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट. बिजनेस के टर्म्स में यूज करें तो वो शब्द को बोला जाएगा प्रॉफिट. जो बच जाते हैं ना आपके खर्चे सारे इनकर होने के बाद, जो पैसे आपके पास बच जाते हैं, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट, राइट? नेक्स्ट है टेलीकम्यूटिंग. आज के टाइम पे टेलीकम्यूटिंग इज वेरी पॉपुलर, especially post COVID. Everybody is doing work from home, right? So when we are working from home on a computer, that process is telecommuting. So this is again important for your MCQ. Question might come
Dash involves working at home usually on a computer and you'll be given 4 options. तो telecommuting होगा आपका जब, right? Downsizing. This is again related to one of the COVID impacts, right? यहाँ पर क्या बोल रहा है? A planned reduction in the number of employees needed in a firm in order to reduce cost and make the business more efficient. बिजनेस ऑपरेट नहीं हो रहा है ठीक से, कॉस्ट कंपनी की बहुत ज़्यादा है, अब मुझे कॉस्ट कटिंग करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस बंद ना करना पड़े. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज so that I can reduce my cost and at least make my business run efficiently. So this is downsizing. Next is outsourcing. Outsourcing I am sure आप लोग को नहीं पता होगा, ये नया टर्म होगा. इसमें क्या होता है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम लोग अपने काम का, अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा से एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक्टिविटी को आउटसोर्स करवाते हैं. बोलने का मतलब क्या है, एक बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटीज कैरिड ऑन होते हैं, उसमें से अगर कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी मुझे लगता है कि कोई बंदे को मैं अगर वो स्पेसिफाई कर दूँ और वो उस काम को मेरे से ज़्यादा बेहतर करके दे सकता है विद मोर स्पेशलाइजेशन, then when I'm allotting some particular part of my business to some other person, then that is outsourcing the business activity, right? Outsourcing outside the country हो सकता है, outside the city हो सकता है, it can be anywhere. Outsource करना मतलब अपने business का कोई selected function या activity को contract पे देना किसी और को, आपके behalf पे वो उस काम को और बेहतर कर सके ताकि to reduce cost as well. That is outsourcing. नेक्स्ट इज R&D, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कोई भी बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? बिकॉज अगर हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करके रखेंगे ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो बहुत तरह की दिक्कतें आ सकती है. बिकॉज इफ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, तो वी आर इनोवेटिंग समथिंग, वी नीड टू डू फर्स्ट R&D कि हाँ वो चीज़ यहाँ पर लाना सही होगा या नहीं होगा. तो बिजनेस या गवर्नमेंट एक्टिविटी जो भी डिजाइन किया जाता है ना, वो इन्वेंशन और इनोवेशन को स्टिमुलेट करने के लिए किया जाता है, इन विच रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? नेक्स्ट है हेडक्वार्टर. आपको पता होगा हर एक कंपनी का एक अपना हेडक्वार्टर होता है जहाँ पर वो इनिशियली स्टार्ट होता है, जो उसका मेन ऑफिस होता है, और फिर वो अपने धीरे धीरे ब्रांचेस खोलते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दोज आर ब्रांचेस, बट जो मेन ऑफिस होता है, जो सबसे पहला ऑफिस होता है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? हेडक्वार्टर, राइट? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है बेसिकली किसी भी एंटरप्राइज. नेक्स्ट है मार्केट. मार्केट वर्ड वेरी कॉमन, द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड. वो प्लेस जहाँ पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं, राइट? ऑब्वियसली कमर्शियल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्री, right? So we are done with 10 words, important words in connection to business. Next आ जाता है हम लोग का, ये जो पार्ट अब आप देखोगे ना, जितने भी वर्ड्स है पूरे एंड तक हमारे चैप्टर में अब आपको यही मिलेगा. इट इज नथिंग लाइक बट जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, जहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स है और उसके मीनिंग या टर्म्स को समझाया गया है. देयर आर अच्छा खासा है, 200 वर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं. सारे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे एब्रिविएशन है जो आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको पता भी होगा. तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है या जो समझने लायक है वो मैं आपको इसमें से करा दूंगी, ठीक है? वन बाय वन विल गो थ्रू एवरीथिंग, एंड जो भी आपको अलग से डाउट होगा यू कैन रीच आउट टू मी. फर्स्ट वन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, दैट विल बी एडजॉर्नमेंट. दैट इज द एडजॉर्नमेंट. What do we understand by adjournment? Postponement of a court session until another time or place. वो एक मूवी थी ना जिसमें डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. याद देखा किसी को? मतलब डेट को बार बार क्या किया जा रहा है? पोस्टपोन कर दिया जा रहा है. कोर्ट की हियरिंग है 5 तारीख को होने वाली थी, फिर उसको पोस्टपोन करके 10 कर दिया जाता है. 10 तारीख आती है तो आते आते फिर पोस्टपोन होके 15 हो जाती है. मतलब क्या हो रहा है? मीटिंग हेल्ड ही नहीं हो रही है, बार बार क्या हो जा रही है? पोस्टपोन हो जा रही है. दैट इज एडजॉर्नमेंट. लॉ में आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड इन मीटिंग्स, राइट? Adjournment of meeting means postponement of a session, court session or meeting to another time or place. Okay, cool. Next is agenda. Okay. All are doing company secretary should be aware about this word agenda. एजेंडा क्या होता है? मुद्दा. हिंदी में अगर मैं एजेंडा बोलूँ तो इसका मतलब होता है मुद्दा. माने एक बिजनेस में एक बिजनेस मीटिंग में क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर में हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे,
So those list items will be agenda. That is the topic for the day or the meeting. That is agenda, right? Purpose. Okay. Next is we will do amalgamation. Amalgamation. दो लोगों का मिलन को क्या बोलते हैं? Amalgamation. A or B, they get united and form AB. That is amalgamation. Coming together of two or more previously autonomous business. पहले A एक अपना अलग से autonomous business था, B एक अलग से autonomous business था. Now A and B decided to unite and form a third company, that is another company altogether, that is AB Limited. And this AB Limited is a new company, which is example of amalgamation, right? So next we will do annual return. There is annual return now. Annual return भी आपको जानना बहुत जरूरी है. A statutory document filed by every company annually with the registrar of companies (ROC), नाम तो सुना होगा, stating the particulars such as status, names of directors, shareholders, indebtedness, etc. of the company. ये एक मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी मतलब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है which needs to be filed by every company annually. मतलब साल में एक बार फाइल होता है एनुअली, इसीलिए इसका नाम भी है एनुअल रिटर्न. किसके साथ फाइल होती है? आरओसी के साथ. आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. स्टेटिंग दी पर्टिकुलर सच एज स्टेटस, नेम, क्या क्या बातें लिखी होती है इस फॉर्म के अंदर? कंपनी का स्टेटस कि वो एक्टिव है या डोमेंट है, उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम, शेयर होल्डर्स, कंपनी का इंडेप्टनेस, कितनी बोरोइंग्स है, एवरी सच डिटेल्स आर फिल्ड इन द एनुअल रिटर्न एंड दे आर फाइल्ड विद, राइट? नेक्स्ट है एसेट. एसेट कहाँ पर है? एसेट पता ही होगा, 11th-12th में अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है एसेट क्या होता है. Anything to which money value can be attached, owned by a business or individual. It may be financial, such as cash; physical, such as land and building; tangible, such as patent, trademark, or intangible, such as goodwill. असेट्स कितने टाइप के होते हैं? फिक्स्ड असेट्स होता है, करेंट असेट्स होता है, टैंजिबल होता है, इनटैंजिबल होता है. ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके 11th-12th से, राइट? तो यहाँ पर अगर हम लोग एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, कोई भी ऐसा चीज जिसमें कोई मनी वैल्यू अटैच होता है, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे वो इंडिविजुअल. एसेट देखो, बिजनेस के भी एसेट्स होते हैं, हमारे इंडिविजुअल के भी एसेट्स होते हैं. फाइनेंशियल नेचर की अगर बात करें एसेट्स की, तो कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, टैंजिबल एसेट्स, ये सब टैंजिबल हो गए, मतलब वी कैन टच एंड फील दैम. बट इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है? गुडविल. किसी की भी गुडविल को वी कैन नॉट टच, राइट? सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ इनटैंजिबल एसेट. नेक्स्ट इज अटेस्टेशन. अटेस्टेशन कहाँ पर? Attestation. Attestation is authentication of a signature by an authorized person who could be an oaths commissioner or a notary public. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कोई भी अपना सिग्नेचर को ऑथोराइज करता है ना, अगर वो कोई कमिश्नर हो सकता है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का पर्सन हो सकता है, when he is giving his consent in writing that yeah he is authorizing this and this, that means the person is attesting himself or giving his signature. That process is called attestation. Okay. Next है balance sheet. Everybody, I hope आप लोग को पहले से पता है बैलेंस शीट होती क्या है. It's a financial statement which is prepared at the end of a period, financial year basically. And what does it show? It shows the assets, liabilities and net worth of an organization. बैलेंस शीट में क्या होता है? एक तरफ असेट्स होती है, एक तरफ लाइबिलिटीज होता है, और with the help of assets and liabilities we are able to identify the net worth of the company or organization, right? Next है bankruptcy. bankruptcy, ये वर्ड सुनते ही किसी का ध्यान आता है क्या गाइस आपको दिमाग में? जय माल्या, isn't it? Bankrupted, right? A legal condition where a person or a business in which liabilities exceed the assets and debtor is unable to repay amounts owed. एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक बंदा या कोई बिजनेस की लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी एसेट से, और उनके डेटर्स रिपे नहीं कर पाते उनको अमाउंट, जितना भी वो पाते थे बाजार में, मार्केट में, उनके पैसे सारे डूब जाते हैं. दैट मींस दैट पर्सन इज बैंकरप्ट, राइट? नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टर. इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? कैविएट एम्प्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कैविएट एम्प्टर. What is caveat emptor? A legal doctrine literally meaning let the buyer beware
of what he is buying and satisfy himself about the quality and condition of what he is buying. Let the buyer beware, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है let the buyer beware, माने जो खरीदने वाला इंसान है उसे खुद को सावधान रहना जरूरी है. He is liable because when he is buying, he is liable. He should be beware. He should be aware of what he is buying. And when only he is satisfied about what he is buying, about the quality and condition, he should buy. So basically it means कि जो buyer है वो खुद जिम्मेदार होता है वो जो खरीद रहा है उसके लिए. Nobody else can be held responsible for what he is buying and about the quality and condition of what he is buying. He himself should be aware about it when he is buying. Okay. Next है collateral. Collateral. Okay. A security generally in the form of fixed asset and offered in addition to those already furnished. क्या बोल रहे हैं? कभी कभी क्या होता है ना, हमें मान लो अगर एक लोन लेना होता है मार्केट में और लोन लेने के लिए हमारे पास सफिशिएंट से गारंटी या कुछ है नहीं. सो व्हाट वी कैन डू इज हमारे पास जो भी एसेट होती है ना उसमें से कुछ पर्टिकुलर एसेट को वी कैन कीप एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इन अगेंस्ट दैट लोन वी आर टेकिंग. That is girby kind of, you can say. Exactly. मतलब आप एज अ सिक्योरिटी जमा करा रहे हो उस चीज को so that you can avail that extra benefit. Maybe you can take a loan against it, right? Next है consortium. ये आपके लिए शायद नया concept. Okay. An association of companies formed for the purpose of understanding a particular activity. There may be no other connection between the companies outside the scope of activity. It is usually to share the companies outside the scope of activity. Sorry. It is usually to share the limited resources and risk associated with the activity undertaken. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोई भी एसोसिएशन ऑफ कंपनीज माने ग्रुप ऑफ कंपनीज जो बनाई जाती है ताकि वो लोग एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके और इनका कोई कनेक्शन भी नहीं होगा मे बी बिटवीन दो वो कंपनीज जो उस एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करती है. तो यहाँ पर क्यों बनाया गया इन कंपनी को फॉर्म करने का मोटिव क्या है ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम शेयर कर सके और रिस्क को सारे एक्टिविटीज के साथ एसोसिएट कर सके, इक्वली डिवाइड कर सके, राइट? ओके. नेक्स्ट इज डीड. Deed. D-E-E-D, deed. What is a deed? A deed is a legal document in writing, signed, sealed and delivered by the person making the deed. एक legal document होता है in writing which is signed, sealed and delivered by the person making the deed. जो इस deed को बनाता है उसकी उसमें signature, उसकी seal, stamp और it should be delivered by the person himself who is making the deed. Okay. Now, dematerialization. Next topic is dematerialization. What is dematerialization? Demat. Have you heard the term demat account? आज के टाइम पे हम लोग को अगर ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में, we need to have mandatorily a demat account, right? Demat account और dematerialization वो process हो गया of having a demat account. That is, we are converting our shares or debentures to electronic form. That is dematerialization. Getting things converted to electronic form, not things basically to be particular stocks, shares, or securities, right? So anything which is in physical form, if we want to convert, I mean, when I'm talking about securities. So conversion of securities from physical paper to electronic form is dematerialization. Okay. Next, dissolution. Dissolution आपको पता होगा, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है अकाउंट्स में, राइट? द लीगल एंड ऑफ अ मैरिज आल्सो कॉल्ड अ डिवोर्स. यहाँ पर बात हो रही है मैरिज के पर्सपेक्ट से. कंपनी के पर्सपेक्ट से अगर हम बात करें तो कंपनी का बंद हो जाना इज डिसोल्यूशन. और अगर यहाँ पर हम दूसरे एस्पेक्ट से सोचें तो इट कैन बी इवन एंड ऑफ अ मैरिज, लाइक पीपल टेकिंग डिवोर्स. अ कपल टेकिंग अ डिवोर्स मीन्स दे आर एंडिंग देयर मैरिज, राइट? So it's a legal end of a marriage, that is the dissolution. Okay. Next, entrepreneur. Entrepreneur भी आपको पता होगा क्या होता है, कौन होता है. Entrepreneur is someone who starts a new business venture, someone who recognizes and pursues opportunities others may not see as clearly and finds the resources necessary to accomplish his or her goals.
एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो अपना एक नया बिजनेस वेंचर चालू करता है और खुद से सब कुछ करता है. ही इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म एंड ही uses his resources to accomplish his or her goals, right? नेक्स्ट है फिक्स्ड, सॉरी, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं. एनी केसेस? इट्स नॉमिनल वैल्यू, राइट? शेयर्स के फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? Okay, a value evident from an examination of the object itself usually means the amount printed on the face of a security as opposed to its market value. The value which is written at the face of the particular thing, security, shares के face पर जो value mentioned होती है, that is called the face value of the shares. Not the value at which it is traded, mind you. जो value पे वो market में trade होती है उसको हम लोग बोलते हैं market value. But the amount which is printed on the face of the security is called the face value or the nominal value. Right? Next है financial statements. What is financial statement? P&L account, balance sheet, cash flow statement, all these are part of financial statements, right? So an integral part of the loan application process is furnishing information that shows your business is good credit risk. The standard financial statement packet includes four main reports: the income statement, balance sheet, statement of cash flow, and statement of shareholders equity if you have shareholders. So what all constitutes a financial statement? चार main components होते हैं financial statements के. Income statement तो कि कुछ नहीं, nothing but P&L account को ही हम लोग अब schedule 6 device के basis पर इसके हम लोग बोलते हैं income statement. Balance sheet is balance sheet only. Statement of cash flow, and the next is statement of shareholders equity, which is only present in case the company has shareholders, right? Next concept is holding company. Okay. A company which controls the activities of one or more company which are known as subsidiary company. देखो, एक पेरेंट कंपनी होता है, एक चाइल्ड कंपनी होता है. तो पेरेंट कंपनी क्या होता है? जो चाइल्ड कंपनी को होल्ड करता है, मतलब उसके अंडर में है, ये उसके सब ब्रांच, राइट? मेन कंपनी जो होता है ना वो होल्डिंग कंपनी है. उसके मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स अगर मेरे पास है तो मैं उस कंपनी की क्या हूँ? होल्डिंग कंपनी. अब जो दूसरी कंपनी है जिसे मैं होल्ड करके रखी हूँ मेजॉरिटी शेयर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक, देन दैट कंपनी इज माय सब्सिडियरी कंपनी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा insider trading. Okay. It's important again. Trading in a company shares by a person connected with and having access to its sensitive, unpublished and confidential information. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कोई भी कंपनी के शेयर्स में अगर ट्रेड करता है एक इंसान और जिसके पास एक्सेस होता है इस कंपनी की सारी सेंसिटिव, अनपब्लिश्ड, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की, and he is trading on those, that means he is doing insider trading. It's a bad practice, let me tell you, because you cannot leak out companies confidential information or unpublished information. We are so sensitive, right? But when a person is trading in such shares and he's aware about the sensitive unpublished confidential information, that practice is called insider. Next, libel. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे that is LIBEL, libel. Defamatory material in recorded form is a post from slander which is oral. The victim may file a suit for damages. Defamatory मतलब किसी के भी अगर आप किसी को आप इमोशनली हार्म करते हो ना, that is defamation. Defamatory material in recorded form is a post from slander which is oral. Means you are harming somebody orally through words. Okay, a defamatory action. So what is the right the victim has? Victim माने जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं वो victim होता है. और victim के पास क्या right होता है? To file a suit for damages. He can claim for damages. He can file a suit against that person who is doing a defamatory action against him, right? Next है MOA, Memorandum of Association. हम तो सुना होगा, right?
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब हम लोग पढ़ कर आ चुके, राइट? What is MO? A document which contains the provision of company's constitution which is filed with ROC at the time of incorporation of a company. It is a document which is filed with ROC at the time when the company is incorporated, right? It states the name of the company, its objectives and amount of capital. क्या क्या बातें एक MOA में लिखी होती है? कंपनी का नाम, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कितना कैपिटल कंपनी का है, ये सारी बातें मेमोरेंडम में। नेक्स्ट, merger. What is merger? Amalgamation of two or more enterprises which were previously separate, usually to achieve greater viability and control. The new entity may retain the old name in full or part thereof for reasons of goodwill. What is merger? Amalgamation पढ़ा था, याद है? It is a type of amalgamation only. The difference is यहाँ पे जब दो कंपनीज अमलगमेट होती है, लेकिन वो पूरे पहले की जो दो कंपनी है उनके अस्तित्व एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करती, उसको कंटिन्यू रखने के लिए what they do, either they keep the retain the old name, maybe full same as the old name, उसी में कंटिन्यू करती है, या फिर कुछ पार्ट ऑफ द ओल्ड नेम को वो लोग रिटेन करती है, ताकि क्योंकि पहले से ऑलरेडी वो दोनों कंपनीज के मार्केट में गुडविल थी. So to retain that goodwill, what they do, they do not change the name of the company entirely. They keep the old name and they merge both the companies together. That is merger. It's a form of amalgamation. Right? Next है NABARD. NABARD and NASDAQ. These are आपको इसके abbreviations पता होने चाहिए. National Bank for Agricultural and Rural Development को हम लोग बोलते हैं NABARD. And what is NASDAQ? National Association of Security Dealers Automated Quotations. ये आपको प्योरली याद करना. नेक्स्ट है NSE, National Stock Exchange. Right? Again, you need to know this. Next comes patent. What is patent? It's a right or a privilege granted by law to an inventor, also called a patentee, to enjoy the fruits of his invention for a specified period. एक ऐसा राइट या प्रिविलेज लॉ से जो मिलता है ना, जो इसे बनाता है उसे, ताकि वो उसके इन्वेंशन का फायदा उठा सके. देखो, मैंने किसी चीज को इन्वेंट किया तो उसका सबसे ज्यादा राइट किसके ऊपर होना चाहिए? मेरे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने ही उस चीज को इन्वेंट किया है. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई हैव दी पेटेंट. मैं उसका पेटेंट राइट ले लेती हूँ ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके. मैंने उसको बनाया है तो उसकी राइट, सोल राइट जो होती है वो मेरे पास होती है. So what I can do is I can have a patent on that property or product. That's right or privilege enjoyed by the inventor. Next, prospectus. What is a prospectus? A document issued by a company inviting subscription to the public issue of its securities. It lists information for the use of investor and has to include the risk factor. It's an offer document. कभी भी शेयर्स को ऑफर करने से पहले एक ऑफर डॉक्यूमेंट हम लोग पब्लिक को सर्कुलेट करते हैं, दैट इज अ प्रोस्पेक्टस. ये कंपनी एक इशू करती है जिसमें वो सब्सक्रिप्शन इनवाइट करती है पब्लिक से कि आओ सब्सक्राइब करो हमारी कंपनी के शेयर्स. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज कोरम. कोरम लॉ में पढ़ा होगा आपने. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट बिजनेस एट अ मीटिंग. एक मीटिंग को ट्रांजैक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए होते हैं ना, इट डिफर्स. ना, प्राइवेट कंपनी में अलग लिमिट्स है, पब्लिक कंपनी के अलग लिमिट्स है. वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है जानना. ये पता कर लो कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं ना टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ मीटिंग, उसे हम लोग बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, scam. SCAM, scam. A fraudulent activity where usually small sums of money is obtained from a large number of persons so that the activity is not detected. कोई भी fraudulent activity जहाँ पर छोटे अमाउंट ऑफ मनी को आप बहुत सारे लोगों से fraudulently you try to
take them from them, so that वो आपकी एक्टिविटी डिटेक्ट ना हो, बिकॉज लार्ज सम ऑफ मनी होगा ना तो वो पकड़ में आ जाएगा, नजर में आ जाएगा, बट बहुत स्मार्टली फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट स्मॉल स्मॉल सम्स ऑफ मनी फ्रॉडुलेंटली, धोखाधड़ी से, then that you know that the process is known as scam. Okay. Next topic, dot, dot, dot. What is dot? I'm assuming कि आप लोग को ये पता होगा, आपने लॉ में पढ़ा होगा. A civil injury or wrong to someone else on their property. आप किसी को मानहानि, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, किसी को आप फिजिकली तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप डिस्टरबेंस कर रहे हो सामने वाले, आप अपने नेबर के प्रिवेसी को उसके प्रिवेसी के राइट्स को आप उनसे छीन रहे हो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्टेयरिंग फ्रॉम योर विंडो एट समवन एल्सेस हाउस. जो आपके घर के खिड़की के तुरंत सामने जो घर आपको दिखाई देते हैं, आप उनके घर पे ताका झाकी करते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सिविल इंजरी यू आर कॉजिंग टू समवन एल्स फॉर देयर प्रॉब्लम, राइट? उनकी प्रिवेसी को आप. नेक्स्ट है TRAI, ट्राई. That's a full form again. Telecom, I mean abbreviation, Telecom Regulatory Authority of India. Next है trademark. What's a trademark? And a distinctive mark or sign or symbol protected by law and placed on goods to identify the manufacturer. एक साइन और एक मार्क होता है कंपनी का, हर कंपनी का एक यूनिक ट्रेडमार्क होता है जो लॉ के थ्रू द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो हम उस ट्रेडमार्क से ना पहचान जाए. आई जिसकी आईटीसी लोगो होता है ना, हर कंपनी का अपना एक स्पेशल लोगो होता है, आईटीसी का अलग लोगो का अलग लोगो है, तो हर एक कंपनी का अपना एक यूनिक ट्रेडमार्क होता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द ट्रेडमार्क दैट विच दिस गुड्स बिलोंग टू विच मैन्युफैक्चरर, राइट? इट इज अ यूनिक. No two companies can have the same treatment. And the last topic for today in this chapter is window dressing. Window dressing क्या होता है? A maneuver engaged in by companies, banks, mutual funds, etc. at the end of an accounting period in order to impress stockholders who will be receiving the report showing that funds are better managed and invested than what might have been gone out. ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पर? कंपनीज, बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स, इन लोग अकाउंटिंग ईयर के एंड में इन लोग इम्प्रेस करने के लिए स्टॉक होल्डर्स को एक अब अच्छा रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे, ताकि ये लोग चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर्स इनकी कंपनी से हटे नहीं, जो भी शेयर होल्डर्स है, जो लोग इन्वेस्ट करके रखे, वो लोग वी विल नेवर वांट देम टू गो, राइट? सो दे विल प्रेजेंट देयर रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वेरी वेल मैनर्ड वे that will impress them and keep them associated with the company. So that dressing or that representation is called window dressing. That is, they are representing their financial statements in a a proper manner. Okay. So this was all about